Hello to each and every one of you and welcome to Steven Sir Makes It Easy. So, what have we been doing till now? Well, for this particular lecture series, we have been learning, I've been teaching, you have been learning not-for-profit organization. By the way, learning जो होता है वो दोनों तरफ से होता है. Meaning I teach, you learn, and on many occasions through teaching you, I am also learning something. Okay, so every lecture is a learning, a stepping stone ahead for you as well as for me. Before I get started with today's continuity of accounting for not-for-profit organization, a very quick reminder with the social media handles above: Facebook, Twitter, Instagram. You can get connected. You surely should get connected with us through those channels. Very importantly is the Telegram channel given above, so that at the end of every chapter you can receive the PDF version of all the questions and solutions which have been taught during these lecture series. In every specific lecture, particular lecture, that particular PDF will also be available in the description given below. Yes, if you do intend to purchase the textbook from which the questions and the solutions are being provided, the link for the purchase is also available in the description below. Okay, that's as far as my general responsibilities are concerned. Right now is the teaching responsibility. So what have we done till last time? In the last lecture introduced to you how do you prepare an income and expenditure account from a receipt and payment account. Receipt and payment account is cash basis. Income and expenditure is accrual basis. In receipt and payment account there are multiple things given, meaning capital items are written, revenue items are written, income, expense, asset, liability, everything is mixed. You have to segregate and you have to try to find out how do I prepare from a receipt and payment account a income and expenditure account. Last time one question, it was just an introductory question, very basic level. Today also basic level, but yes, with a few incorporated adjustments. Okay, so today we are not getting into a balance sheet. All our three questions are going to be receipt and payment being converted into income and expense. Now I gave you the features of income and expenditure last time, so everything of this has been explained. This is just a reminder and you may think कि सर ये पीछे क्या हुआ, ये तो नहीं था. नहीं, बेसिकली व्हाट वाज दिस, दैट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में आता है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आता है, एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. लेट मी स्टार्ट दिस लेक्चर विथ आवर फर्स्ट न्यू प्रॉब्लम फॉर द डे, अ रेदर सिंपल वन. ओके, दिया क्या है? वेल, लेट्स रीड अबाउट मी. ओके, अ फ्यू थिंग्स जो मेरे मॉनिटर पे स्क्रीन पे होने से ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम्स. मैं थोड़ा सर्कस कर लूँगा या लेफ्ट राइट मैं कर लूँगा. ओके, सो फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो, आई एम ऑब्वियसली रीडिंग द क्वेश्चन. प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन Delhi Club. Well, not just Delhi, every state, every union territory, every city should be clean, but चलो आज के लिए clean Delhi Club for the year ended 31st March 2017. Previously मैंने ये कहा है, आज भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि this is the format. Why don't you pause the video? Why don't you prepare this format and then with me, why don't you solve? Because accounts is never, any subject connected to finance, connected to accountancy is never a theoretical subject. It is never कि मैं पढ़ लेता हूँ. No, my dear. Okay, लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ. Okay, कोई भी चीज़, ये साइंस तो नहीं है. ओके, बट हाँ, ये
सच्चाई जरूर है कि अगर मैं कोई चीज 10 बार पढ़ूं या एक बार लिखूं, वो एक बार लिखने में जो दम है वो 10 बार पढ़ने में नहीं है. So it's always a good idea to write, and accountancy is a subject to be practiced. So I hope you join me with the solution. Right now, what is there in the receipt and payment account? Receipt में there is balance brought down of what? Cash in hand. Cash at bank नहीं है. Okay, तो बैंक बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ कैश इन हैंड ओके ऑफिस में ही होगा. वैसे भी दैट इज एन एसेट, इट डज नॉट गो टू दी रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस ये दो चीज पे ध्यान देना है, बाकी का इग्नोर, एटलीस्ट अभी के लिए इग्नोर. ओके, सेकेंड आइटम सब्सक्रिप्शन. हाँ, तो आई विल राइट इट एज एन इनकम. Entrance fees, I will write it as an income. Donation, I will write it as an income. Rent of hall, you may wonder, sir ये कौन सा hall है? Many not for profit organizations, whether वो school है, library है, hospital है, they will normally be a big hall. Okay? And many times वो hall खाली भी रहता रहेगा, empty. No, there is no use for it. So basically what is done? Many of these organizations, for any social event, maybe it's an engagement, it's a birthday party, it's a wedding क्यों नहीं, it is given on rent. जब रेंट पे देते तो रेंट आता है ना, इनकम आता है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेंट ऑफ हॉल. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हर दिन नहीं बेचते, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, क्योंकि वो एक एसेट है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो आज के हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगा. नेक्स्ट, पेमेंट साइड, ये जाएगा एक्सपेंडिचर में. सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, sundry expenses. Very simple expenses. Very simply I will write it on the expenditure side. Yes, books purchased. Okay, many a times these are not film fair magazines, these are not jokes वाले books. Okay, वो अच्छा सिंह है ना, जोक्स का पिटारा है मेरे पास, नहीं, ये वो जोक्स वाले बुक्स नहीं है. हाँ, सो दीज आर बुक्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय वन पर्सन बाय रीडिंग इट. ओके, maybe it's on economics, maybe it's on geography, maybe it's on biology, maybe it's on politics, etc etc etc, maybe it's on general knowledge. okay, तो ये बुक्स एक बार खरीदते हैं और क्लब्स में ये दूसरे मेंबर्स और तीसरे मेंबर्स और चौथे मेंबर्स इसको हर साल यूज करते हैं, तो ये एक एसेट होता है, नॉर्मली एक एसेट. देन गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड ऑल्सो इज एन इन्वेस्टमेंट एसेट. फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक, above me, fixed deposit with bank also is an asset investment. So मतलब ignore इसको देखना है, because we are not preparing a balance sheet. ये लास्ट का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस. देन अगेन एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, हमको तो नहीं बनाने का है बैलेंस शीट. सो वी आर ओनली प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर वी आर ओनली ट्रांसफरिंग income and expenses. Very importantly, for which year? Please always remember in this chapter, 3 साल, last year, current year and next year. Current year कैसे पता चलता है? Very simple. ऊपर देख लो, for the year ended 2017. So it has to be 16-17. I repeat. Above me, you see the current year 16-17 and accordingly you see the next year 17-18 and the last year 15-16. In this question इतना कोई हेरा फेरी नहीं है, years का इतना तकलीफ नहीं है. Yes, it will be a little bit more complicated as in when the chapter progresses ahead. Right now, what do? You write in the books of, you write income and expenditure, you write debit, credit, and that's it. We get started. I will, as usual, fluctuate okay between the question and the आंसर. सो हियर गोज. अब तक तो आपने डायग्राम फॉर्मेट बना भी लिया होगा, सो यू कैन जॉइन मी. हाँ, कैश इन हैंड ओपनिंग वो एसेट है. कैश इज वो ओपनिंग हो, वो मिडल में हो, वो क्लोजिंग हो, इट इज एन एसेट ऑलवेज, सो इट विल ऑलवेज गो टू द बैलेंस शीट. ओके, सब्सक्रिप्शन 22,500 इनकम साइड पे लिख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 22,500.
500. It is for the current year, very importantly, because I cannot write of the last year. I should not write for the next year. I should only write for the current year. Next, entrance fees 1250. न्यू मेंबर्स जब आते हैं तो वो एंट्रेंस फीस देते हैं, तो वो रेगुलर होता है क्योंकि न्यू मेंबर्स तो रेगुलरली आते रहते हैं. 1250. Donations to 500. Every not-for-profit organizations receives donations nationally and internationally. तो वो रेगुलर है, रेगुलर इनकम. डोनेशन से तो इनकी गाड़ी चलती है. So assumed general 2500. You may say, but sir वो वैसा क्यों लिखा है assumed general? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग डोनेशंस देते हैं और लिख के देते हैं. Only use it for making a new computer lab, for making a new physics lab, for making a new biology lab, for constructing a building. काफी बार होता है, वो होता है specific donation. This is general. Okay, तो specific donation liability side पे जाता है, but right now don't worry क्योंकि we are not getting into that. वो most probably next time होगा. Next, rent of hall. इनकम साइड पे चला जाएगा. 750. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सी इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो उसका सेल परचेस होगा तो वो नॉर्मली एसेट होगा. हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज एन इनकम, वो बात अलग है. ओके, पेमेंट साइड. सैलरी, रेंट, electricity, taxes, printing, sundry expenses, all of them are expenses. So एक एक करके मैं लिख लेता हूँ, एक साथ में लिख लेता हूँ. दोनों सही है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, बट मैं क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ वापस, तो एक साथ में one by one. So salary, it is obviously an expense, 1500. These don't have any adjustments today. प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग होगा तो फिर एक लाइन खाली रख लेंगे हम लोग. रेंट 800, इलेक्ट्रिसिटी 3500, taxes most probably you paid to the municipality, to the local body, 1700. Printing and stationery, postage, courier, these are very normal expenses. Sundry expenses 920. So this is a list of all the expenses. Just to tell you, question में कुछ है तो बहुत कुछ. Books purchased, government bond, fixed deposit, and this cash in hand, cash at bank. But everything is an asset and we are not right now preparing a balance sheet. तो खर्चे तो खत्म हो गए, कमाई भी खत्म हो गई, फिर टैली कर लेते हैं. इनकम ज़्यादा आया तो सरप्लस आएगा, आज तक तो वही आया है. सो द इनकम, द क्रेडिट साइड इज हैवी 27,000, and on the debit side, after you subtract all the expenses, 18,200. क्योंकि इनकम इज मोर and expense is less, we call this as surplus, which is the balancing figure, and it is excess of income over expenditure. So everyone, this is our first question for the day. It did not have any adjustments. Most probably in our next two questions we will be dealing with adjustments. So let me move on and not take up much of your time. So this is problem number 3. Okay, again it depends upon whether it is from the question bank or whether from the illustration part. So obviously ऊपर लिखा गया है illustration. From the following receipt and payment account for the year ended March 31st 2015 of Negi club. Maybe it's a sports club possible रहेगा क्योंकि club कहाँ है ना, इसके लिए. हाँ, अभी 2015 कहाँ है, 2015. So to show you that the current year ends in 15 above me and it starts in 14,
तो 14-15, तो प्रीवियस होगा 13-14 एंड नेक्स्ट ईयर होगा 15-16. ओके, टिल नाउ द इयर्स इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो करना क्या है, लिखना है इन द बुक्स ऑफ, लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आज इस प्रॉब्लम में 2 कॉलम क्यों है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं ना. सो एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है या तो प्लस या तो माइनस. तो वो प्लस माइनस करने के लिए इनर कॉलम इज अ गुड आइडिया टू बी ड्रॉन. इट्स अ गुड आइडिया, कंपल्सरी नहीं है बट इट्स अ गुड आइडिया. नाउ फर्स्ट आइटम क्या है, बैलेंस कैरीड डाउन बैंक. इट्स एन एसेट. वी आर स्टिल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. तो क्यों चिंता करनी है. सब्सक्रिप्शन में 3 साल है, आप गलत साल पे नजर मत डालना. ओनली द करंट ईयर. अच्छा, करंट ईयर तो 2014 ओके एंड 14-15 है. जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, 14-15 10,000. तो हम लोगों को 10,000 लिखना है. द फर्स्ट ईयर ऑफ 2013 इज द लास्ट ईयर, 2015 is the next year. Okay, that should have been written in a bit of a better style कि 14-15 उन्होंने बिगनिंग लिख दिया है बट 14-15 होना चाहिए था. हाँ, डोनेशन नॉर्मल इनकम होता है. हॉल रेंट अभी तो किया, रेंट फ्रॉम हॉल इनकम होता है. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स जो उनको डोनेशन मिलता है मेजर अमाउंट वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. ओके, हाँ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. प्लीज नोट, बैंक डिपॉजिट इज एन एसेट बट द इंटरेस्ट इज एन इनकम. सो जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है वो हमको लिखना है. वी हैव टू राइट इट ऑन द इनकम साइड. एंट्रेंस फीस नॉर्मल इनकम. अबाउ परचेस ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर इज एन एसेट. उसका डेट आप देख लेना, 1/7 मतलब 1 जुलाई. सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. I counted 9 months. Now hold on. Furniture we will not write because again ना balance sheet नहीं बना रहे हैं. But just keep in your memory that वो furniture which you have purchased is for 9 months. 9 months. The life, जिंदगी is for 9 months. याद रखना, काम आएगा. Salary expense, telephone expenses, obviously expense. Electricity charges, postage and stationery expense. Purchase of books, a few minutes back I told you these are not entertainment books, these are not jokes ka pitara wala books, knowledge ka. Okay, and they are used for many years. So it's an asset. Entertainment expenses, हाँ ये खर्चा होता है तो ये आपको लिखना है. अच्छा, purchase of 5% government papers. Now you may wonder, सर कौन सा गवर्नमेंट का पेपर खरीद रहे हैं. सी दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट जो एक इन्वेस्टमेंट का नाम है, क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट है. इट्स नॉट अ शेयर और अ डिबेंचर, क्योंकि अ शेयर और अ डिबेंचर विच यू मे हैव लर्न लास्ट ईयर ऑल्सो, ओके, इज समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट इट इन अ कंपनी. गवर्नमेंट शेयर्स डिबेंचर्स नहीं बेच सकती, तो वो बॉन्ड बेचती है या इस तरह के गवर्नमेंट पेपर्स. ये इन्वेस्टमेंट होते हैं. अगेन इन्वेस्टमेंट है तो हमको क्या करना है. ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाँ खर्चा है ये हम लिखेंगे. लास्ट का कैश एंड बैंक, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस. अगेन एसेट एंड लाइबिलिटी के साथ वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग. पॉइंट नंबर 1, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सैलरीज आउटस्टैंडिंग. ओके, तो आई होप यू रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, आज का खर्चा. ऐसा खर्चा जो है तो आज का, टुडे, करंट ईयर, बट यू हैव नॉट पेड इट. मेरे पैसे खत्म हो गए रहेंगे, एटीएम में पैसा खत्म हो गया रहेगा, बैंक में या तो जेब में खत्म हो गया रहेगा या तो तिजोरी में. तो यू टेल दी एम्प्लॉय के सर आपने काम किया है, ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि आज पैसे नहीं हैं, आप कल आइए.
और कल आपका पैसा ले जाइए। आज के लिए ये आउटस्टैंडिंग है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल पे टू यू tomorrow or maybe after 5 days or 10 days. Payable. So the word outstanding here means payable, and everything which is payable has to be added. So salary में will leave one line. Second, entertainment expenses outstanding. Same story. Entertainment का जो खर्चा था, okay, वो आपको now you may wonder कि सर ये entertainment expense क्या है? Think about it. अगर आप कोई थोड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, ओके, मे बी एन आई सर्जन, एन आई स्पेशलिस्ट, ओके, सम बिग पर्सन, तो कोई ना कोई टीवी रहता है और टीवी पे कोई ना कोई केबल का चैनल चलते रहता है, बिकॉज यू हैव टू वेट मे बी हाफ एन आवर, मे बी 1 घंटा, ओके, तो आप गुस्सा हो जाओगे, तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है, मैच चलते रहता है तो टाइम पास, एंटरटेनमेंट हो जाता है, ओके, तो आप वैसा बोल सकते हो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। हाँ, तो वी विल लीव वन लाइन फॉर दैट। Bank interest receivable. I hope you can see there is interest on bank deposit. तो वो पूरा नहीं है, आपको और इंटरेस्ट मिलना है, तो उसके अंदर एक लाइन खाली रखना पड़ेगा फॉर एन एडजस्टमेंट। Obviously all of these that you see are adjustments. Point number 4, subscription accrued. What is subscription accrued? Subscription is members से आया पैसा. Accrued is a little bit of a confusing word. You have to keep in mind कि ये जो वर्ड accrued है उसके 2 मतलब है, payable, receivable. So right now what is the meaning? Well, it depends upon ये किसके साथ connected है. अगर income के साथ connected है like subscription, then it is receivable. But अगर salary, rent के साथ connected है, okay, electricity bill के साथ connected है, then it is payable. So accrued खुद से उसका कोई मतलब नहीं है, but when it comes with an income, then it is receivable. When it comes with an expense, then it is payable. For this subscription which is receivable, I will leave one line for subscription above. 50%, second last one, fifth one, of the entrance fees is to be capitalized. What do you mean by capitalized? Removed from entrance fees and added to capital fund. Very quickly, कैपिटल फंड क्या होता है? वेल, इसके पहले, ओके, व्हाट हैव यू लर्नड? वेल, नॉट द प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले यू हैव लर्नड अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वे 1 पर्सन इज द ओनर, अगर पार्टनरशिप रहा तो 2 या 3 पीपल विल बी द ओनर ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, religious institutions, okay, you don't have a single owner, there is a committee भी ओनर नहीं होती है, the managing committee is just running the show, वो सिर्फ गाड़ी चला रही है, तो मालिक कौन है? मालिक सभी लोग हैं, सभी मेंबर्स मालिक होते हैं, ओके, तो मेंबर्स का पैसा जब पूल इन किया जाता है इकट्ठा, टुगेदर इट इज बॉट, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड एंड दैट इज रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो एंट्रेंस फीस को क्या करना है? माइनस करना है फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल फंड विच बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी हम आज नहीं दिखा सकते क्योंकि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट सिर्फ बता रहा हूं कि व्हाट इज कैपिटल फंड, collection of the contribution that all the members pool in together, bring in together. So we'll leave one line for entrance fees. And point number 6, furniture is to be depreciated at 10% per annum. Just to remind you, furniture लिखना नहीं है, but depreciation definitely is an expense. So we have to calculate how much is the depreciation. Well, वो during the solution देख लेते हैं. Right now, let's start with the solution. So please keep in mind, salary, entertainment expense, bank interest, subscription, entrance fees, everything has an adjustment. Leave one line, okay, because we either have to do a plus or a minus. Right now, subscription. Don't look at 2013, don't look at 2015. 14 जो है, that is the current year. So 10,000 rupees is what I will write on the income side and I will leave one line. क्यों? क्योंकि जो है वो रिसीव्ड है,
but there is a receivable. Accrued कहा ना, receivable. Next, donation to 500. Discussion of the question actually consumes a lot of time, so when I am solving it, okay, एक बार discussion हो चुका है तो speed थोड़ा बढ़ जाएगा. Hall rent 300. Rent from hall, active voice, passive voice, कुछ भी voice लिख लो. Interest on bank deposit that is received. उसके बाद में point number 3 में receivable भी आने वाला है, तो leave one line. Please leave one line. 450 inner column, one line. Entrance fees 500. इसमें भी एक पंगा है, I mean an adjustment. Leave one line. अभी उधर का डेबिट इधर क्रेडिट हो गया, अभी उधर का क्रेडिट इधर डेबिट होगा. The first item is furniture. Furniture is an asset, तो वो लिखना नहीं है. हाँ, फिर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ये सब लिखना है. तो अगेन एक एक करके पर इकट्ठा. ओके, सो सैलरीज आई लीव वन लाइन 2000 because of an impending adjustment. Telephone expenses 300. Electricity charges 600. Postage and stationery 150. Entertainment में एक adjustment है, तो leave one line. Okay. Then you had purchase of books, but obviously books is an asset, so we don't write it. But then उसके बाद क्या था? 5% government papers, that's also an asset. उसको एक डेट दिया है 110. 110 is 1st October. But then वो government paper पे ही ध्यान देना नहीं है आपको, because you are not solving a balance sheet. Miscellaneous expenses definitely we'll write. कैश एंड बैंक नहीं लिखेंगे. We will write miscellaneous expenses 600. Then was cash and bank closing balance. Then started adjustments. So I think कुछ 6 adjustments है. First one. Now normally an adjustment has 2 effects. एक तो यहाँ पर होगा plus minus and एक balance sheet. But then there is no balance sheet ना, तो अगेन काम आपका कम हो गया. बैलेंस शीट का चिंता मत करना. फर्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आप किसी का पगार देना भूल गए या तो पैसे नहीं थे आपके पास, तो आपने प्रॉमिस किया है कि सर आई विल पे योर सैलरी टुमारो इन फ्यूचर. सो 1500 शुड बी एडेड टू योर सैलरीज विच इज गिवन अबाउ. So the total comes to 3500. Only one effect. Second effect होता balance sheet में liability side पे लिखना. Then we don't have a balance sheet. Don't worry. Okay. Very soon balance sheet भी आ जाएगा. So we will complete the story. Next. Entertainment expenses outstanding. जैसे पहले solve किया in a very similar manner. Go to entertainment expenses and add. 500 टोटल करके बाहर डाल दो 1400. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, बट देन राइट नाउ हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं. थर्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो मतलब हमको मिलना चाहिए, हमारा हक है, मैं भी कल मिल जाएगा, इसके लिए रिसीवेबल कहा है. तो वो जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है ना, उसमें आपको 150 इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम साइड पे, उस तरफ नहीं, इस तरफ ऊपर. इंटरेस्ट रिसीवेबल टोटल 600. okay, everything is added right now.
माइनस का बहाना अलग होता है, रीजन अलग होता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, subscription accrued. Accrued is a very stylish word, but basically it means receivable. Okay, that every member doesn't pay on time the membership fees, which is subscription. कभी कुछ लोग डिले करते, कभी कुछ लोग रिक्वेस्ट करते कि सर कैन आई पे टू यू नेक्स्ट ईयर. नो प्रॉब्लम्स, यू कैन पे इट नेक्स्ट ईयर. ओके, हाउ मच इज दैट? 400. सो गो टू सब्सक्रिप्शन विच इज राइट अबव, और वो जो रिसीव्ड है उसमें रिसीवेबल ऐड करना 400. So the total is 10,400. 10,400. Okay, in the question there is subscription of the last year, next year, but then हम लोग तो current year का ही solve कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, उसको ignore करना है. Next, 50% of the entrance fees is to be capitalized. Okay, so entrance fees किधर है? ये मेरे ऊपर है. कैपिटलाइज मीन्स व्हाट? माइनस करो यहां से 50%. ओके, तो रिमूव. हाउ मच इज इट? 250. तो आउटर कॉलम में भी 250 आएगा. और ये कैपिटलाइज मतलब जाएगा कहां पर? कैपिटल फंड. कैपिटल फंड कहां पर आता है? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड. अच्छा, सो टुडे डोंट वरी, आज इतना काम हमको करना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटलाइज. ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. Next and last, furniture is to be depreciated. Question mark. 10% आता कितना है? फर्नीचर किधर है? देखो ना ऊपर है ना, फर्स्ट लाइन में. परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000. So if you calculate 10%, it's basically 500. But please remember, how do you calculate depreciation? अच्छा, firstly, where do you write it? You write it on the expenditure side. Very importantly, receipt and payment mein you don't write depreciation because it is a non-cash item. You don't pay it to someone. But in income and expenditure, which is on accrual basis, you definitely write depreciation. How much is it? एक working note दे रहा हूं मैं नीचे, उसमें हम 8 फॉर्मूला यूज करते. What's an 8 फॉर्मूला? Amount into rate into time. Amount कितना है? 5,000. रेट कितना है? 10%. टाइम क्या है? डू यू रिमेंबर, आपने जुलाई में खरीदा, जुलाई से आप काउंटिंग करोगे तो आपको कितना आएगा? 9 months. सो यू हैव टू राइट 9/12. देन आपको ऑब्वियसली कैलकुलेशन करना है. यू विल अराइव एट सम आंसर विच शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन. ओके, आई एम माई अपॉलॉजीज. हाँ, अभी क्लियर हो गया. ओके, इट इज 375. Where do you write it? Above. So I repeat, furniture we didn't write, but the depreciation which is happening on the furniture, calculated on the furniture, we definitely wrote. Okay, now what to do? That's it. सारे adjustments हो गए. अभी इसको tally करना है. तो चलिए. Income is again heavy, 14,050. When you subtract the expenses, like always in this sum also आपको surplus आ रहा है, which is 7,125. It is excess of income over expenditure. This question was just to tell you and show you that whatever you have done previously as far as adjustments are concerned, also it is a part of this chapter. Okay, this was a second sum on the menu today. Steven sir has a third sum also, because when we continue in the next lecture, I will be introducing a balance sheet that will increase the time of solution. तो मुझे ये टाइप के आज खत्म कर देने हैं. Okay, here goes. Last question for today. Again, it's problem number 2. Okay, about जैसे दिया है numerical questions में से. The receipt and payment account of Hari Mohan Charitable Institution is given. Again, please look at the year. It is 2015. So the current year, again, my request, आप लोग always join me in the solution. So the current year above is 14-15. The last year was 13-14, and the next year 15-16.
ओके, सो आपका ध्यान 14-15 पे होगा. क्वेश्चन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों एसेट है. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. डोनेशन, हाँ, आई विल राइट ऑन द इनकम साइड. Subscription, I will write on the income side. What is an endowment fund? Okay, above receipt side पे दिया है. Well, एक ऐसा fund is a collection of money जिसका एक specific use होता है. You cannot spend the money in endowment fund for anything. चलो अडानी जी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, चलो हम लोग जियो का रिचार्ज भरते हैं. नो, एंडाउनमेंट फंड में जो दिया गया है, इट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी यूज फॉर अ सर्टेन पर्पस. देयरफॉर इट्स नॉट अ जनरल फंड एंड एवरी स्पेसिफिक फंड गोज टू द लाइबिलिटी साइड. तो आज के लिए वो हमको नहीं लिखना. लेगेसीज, अगर आप नोटिस करो, नॉर्मली लेगेसी गेट्स एडेड टू कैपिटल फंड, बट इट हैज टू बी अ स्पेशल लेगेसी. You may ask a question, sir, legacy क्या है वो ही नहीं पता. Many a times कुछ अमीर लोग, okay, well to do people, वो लोग चाहते हैं, they want that after they leave this world, ये दुनिया जब छोड़ के चले जाएगी, उनका नाम चलता जाना चाहिए. People should not forget their name. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने वसीयत में, अपने will, WILL में लिखते हैं कि 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, certain amount is donated to this not for profit organization. Okay, उनका वकील मेक श्योर करता है that after the person is no longer there, that money goes and the instruction is given कि आपको हर साल, if it's a school, okay, कि इस आदमी के नाम से, इस सर के नाम से, इस मैडम के नाम से आपको एक रिवॉर्ड, आपको एक स्कॉलरशिप बच्चों को देना है, ताकि उनका नाम एनुअल डे पे हर साल लिया जाए. ओके, सो दैट बिकम्स अ लेगेसी. हॉस्पिटल रहेगा तो somebody will say, आप बच्चों के लिए एक वार्ड बनाओ, मेरा नाम बाहर लिखना, ताकि हमेशा के लिए मेरा नाम दिखे. हाँ, लेगेसी हो गया. नाउ अगर वो लेगेसी स्पेशल है, then it will go to the liability side. But if you notice, in the center there is legacies, and at the end there is legacy for building. So the legacy for building is specific. That will go to the liability side. जो सेंटर में लेगेसी है ना, वो जनरल लेगेसी है, उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो नॉर्मल इनकम कंसिडर करते हैं. ओके, इट्स अ न्यू आइटम, तो थोड़ी बात चर्चा ज़्यादा करनी पड़ती है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इनकम है. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो भी नॉर्मल इनकम है. इन्वेस्टमेंट एसेट है, डिपॉजिट एसेट है, बट दिस इज इंटरेस्ट. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी, इनकम. लाखों करोड़ तो कमाते नहीं है, अच्छा चलेगा, 20, 30, 200, 300 तो मिल जाएगा. देन डोनेशन, प्लीज याद रखना, कौन सा डोनेशन? देखो ऊपर डोनेशन है वो जनरल है, नीचे डोनेशन किसके लिए है? बिल्डिंग. अच्छा देखो फिर वो स्पेसिफिक है, बोला ना फॉर बिल्डिंग, अब तो बिल्डिंग के लिए तो यूज करना पड़ेगा. हाँ, दैट विल गो ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो अबाउ डोनेशन एंड नीचे का डोनेशन अलग है, ऊपर का लेगेसी नीचे का लेगेसी अलग है. देन पेमेंट साइड पे फर्नीचर एसेट, वी विल नॉट राइट इट. इन्वेस्टमेंट एसेट, वी विल नॉट राइट इट. एडवांस फॉर बिल्डिंग, ओके, सो प्लीज नोट इट्स अ पेमेंट. तो मे बी बिल्डिंग बनाने के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है. आप ऑब्वियसली ना, अगर आप दर्जी के पास जाते हो कि ये मेरे लिए शर्ट बना दो, पैंट बना दो, सलवार बना दो, ही विल से ना सर कुछ तो एडवांस देना. सिमिलरली यहाँ पे आपने मे बी एक कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया होगा बिल्डिंग बनाने के लिए. सो दैट्स, आई रिपीट माई सेल्फ, द बिल्डिंग इज नॉट खर्चा संडे मंडे ट्यूसडे का. ओके, इट्स एन एसेट. हाँ, तो एसेट में जाएगा वो एडवांस. चैरिटीज, ये डेफिनेटली एक एक्सपेंस है, बिकॉज चैरिटी तो हर दिन होती है, इनका काम है क्योंकि ये होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. ओके, एक्सपेंस. सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, द होल लिस्ट. एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस. एंड लास्ट इज बैलेंस, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. वो तो एसेट है, वो तो लिखना नहीं है.
Okay, prepare income and expenditure account. Obviously we are preparing that. Point number 1, liabilities are to be provided for. कौन से liabilities? रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट. यू मे से सर मतलब क्या है इसका? देखो लाइबिलिटीज ये खर्चे हैं ना. क्या खर्चा रिसीवेबल हो सकता है? आपको मिलना है? नो, आपको पे करना है. यू हैव टू पे. सो रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग, salaries payable outstanding, and advertisement payable outstanding. Leave one line. And the last one, 2000 due for interest on investment. ऊपर है ना interest on investment, was not actually received. Now if you didn't receive it, ऐसा नहीं है कि अरे मतलब गाड़ी निकल गई मिलेगा नहीं. नहीं नहीं, अभी नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा. मिल जाएगा, चिंता मत करना, you will receive it. So you have to leave one line for interest on deposit. Okay, so please do keep that thing in mind. Okay, so let me get started with the solution. पहले जो रिसिप्ट है वो जाएगा हमारे इनकम में, तो वो है डोनेशन 16,000. So above 16,000. Next is subscription 50,200. Writing. There is no adjustment in subscription, so obviously I am not leaving a line. Next, endowment fund, that is a fund which is created for a specific purpose. तो जब तक वो पर्पस, अगर एक माता पिता पैसा जमा कर रहे हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, फर्दर पढ़ाई के लिए, या बेटी को उन्होंने सोच के रखा है कि हमको बेटी को डॉक्टर बनाना है, गुड थिंग. ओके, नॉट जस्ट फॉर द सन्स, यू शुड ऑल्सो थिंक दैट फॉर द डॉटर्स. हाँ, सो दे विल कीप द मनी एंड दे विल नॉट spend that till the time the daughter passes her 12th standard and wants to go into the MBBS training, obviously the training and join a college for that. तभी वो पैसा काम आएगा, तब तक वो रखेगी. वो कहेगी नहीं नहीं, बेटी को बड़ा हो जाने दो, बेटी को डॉक्टर पहले देखते हैं बनना है कि नहीं, अगर बनना है तो ये पैसे काम आ जाएंगे. तो अभी हमको ये एंडाउमेंट फंड कोई काम का नहीं है. लेगेसीज 12,000. हाँ, ये नॉर्मल, ये जनरल लेगेसी है. सो 12,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन डेपॉजिट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लीव वन लाइन, इनर कॉलम. एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डेपॉजिट या सिंपली डेपॉजिट. डेपॉजिट पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी समथिंग लाइक अ बैंक काम करता है. ओके, समथिंग लाइक अ बैंक. नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. इनकम है, नथिंग स्पेशल. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी. ऑलमोस्ट हर घर में पेपर, न्यूज़पेपर आता है और एट द एंड ऑफ द मंथ वो रद्दी बन जाता है. 500. Then there were two different things. एक तो था donation for building and legacy for building. Now both are specific purposes. एक उद्देश्य के लिए उसको रिसीव किया गया है. तो जब तक वो उद्देश्य पैदा नहीं होता, वो एम पैदा नहीं होता, you don't touch that money. It is kept on the liability side. Okay. Payment. Furniture investment and advance for building. These are all connected to assets, or they are assets, so we don't write it. Charities, salaries, rent and taxes, printing, postage, advertisement, insurance. काफी लंबा हो गया. These 7 items, a few of them with adjustments. Rent 1 line, salary 1 line, advertisement 1 line. We will leave क्योंकि हमको बाद में outstanding solve करना है. Again, एक साथ में पर एक एक करके. तो we start with charities, 60,000, because these are charitable institutions.
इनका सबसे बड़ा काम है, द मेजर जॉब दैट दे डू is to do charity. So they spend a lot of money on it. Salaries 10,400, rent and taxes 4,000, printing 1,000, postage 300, advertisement 100. I'm obviously, where there is an adjustment, I'm leaving one line. Insurance 4,800. Okay, then later on cash in hand, cash at bank was there, that's it, an asset. First adjustment, rent में 800 ऐड करना है, सैलरी में 1200 एंड एडवर्टाइजमेंट में 200. सो अगेन देयर इज ओनली वन इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट के लिए मैंने ये आज 20 बार बोल दिया होगा कि बैलेंस शीट नहीं है. तो पहले रेंट में हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मीन्स रेंट विच यू हैव प्रोमिस टू पे, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा. अच्छा, मुझे गाना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स हार्मफुल टू योर ईयर्स, तो मैं नहीं गाऊंगा, बट आप लोग मेरी फीलिंग समझ जाओ. ओके, सेकेंड था सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200, so 11,600, and advertisement outstanding 200, total 1,300. Okay, so these were the three expenses. Income भी था, interest on investment, I think so, yes, 2,000 not actually received. चलेगा, अगर नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा, मिलेगा, किधर भाग के जाने वाला नहीं है, अपना ड्यूटी है लिखने का. सो अबाउ इन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस, बिकॉज इट इज रिसीवेबल, हमारा इनकम है, इट्स अ इनकम 5,800. देन वेल, क्वेश्चन में तो इतना ही था, हाँ, तो आपको टैली करना है. सो अगेन टुडे द इनकम साइड इज हैवी, 85,300. You will get a surplus 1,500. Excess of incomes over expenditure. And well, that is it as far as this solution is concerned. If you are writing this, which you should do that is my sincere advice. Pause कर लो and definitely ये लिख लेना. And as usual, I will very quickly repeat this, that the Telegram channel at the end of the chapter will have the PDF of the entire chapter put together once, and regularly in the description of every lecture you will have the PDF of the connected question and answers which have been solved during that particular lecture. Okay, प्लीज़ अगर आपको जो लेक्चर आज किया गया है और जो आपको समझाने की कोशिश की गई है, I've done my best at my end. If you have understood it, I would highly appreciate it. अगर आप like का बटन दबा दो. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, definitely subscribe. And also you are the mouthpiece of this particular channel, meaning to say the news, the jankari of what is done on this channel will only go through you to your friends. So if you can please share this with others, that would be amazing. If there is any confusions, any doubts, in the comment box वो doubt आप रख सकते हो. We will do our best to provide a solution and an answer for that. Okay, that is it for today. This is Steven sir. This is a goodbye from me. Please अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना. They are the most important things that you should treasure. Good day to all of you. God bless. Bye for now.